हो जाता है, आपके मुंह से टेस्ट चला जाता है, आपकी जिंदगी से टेस्ट चला जाता है. At the same time, you are not creative anymore. You work like a body. सवेरे ऑफिस जाते हो, शाम को वापस घर आते हो, but there is no creativity. You are not creative. You are just working mechanically. ये चक्र है आपकी identity का. This is where you realize your identity. Now, what is self-esteem and how does it help us? Who will answer? What is the meaning of self-confidence? What is self-esteem? Self-worth. It is self-worth, but what does that mean? What is self-worth? क्या है self-worth? You say I have self-esteem, I have self-worth. पर वो है क्या? What it is? मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ. Is that self-worth? स्वाभिमान है. What is it actually? हमें कैसे पता लगता है कि किसी का self-esteem अच्छा है, किसी का self-esteem नहीं है? How do we come to know? How you communicate with other people confidently. Okay. So you say that self-esteem is about your communication with people. Okay. Anybody else? Your self-worth. Yes. I'm asking the definition of self-worth. How would you feel good about yourself? Okay. It is that you feel good about yourself. Okay. Love yourself. Closer. You love yourself. Self-love. Self-respect. Okay. You know your value. You respect yourself. Okay. How So do it you is- value yourself in your own eyes? Okay. Yes. Exactly. The meaning of self-esteem is yes. It is the meaning of self-value. How do you value yourself? But it is not self-respect. Because self-respect is in Manipur Chakra. You respect your opinions and your thoughts. But self-esteem means you value yourself exactly as you are today. So it is the pride of being yourself through joyful unions with people and situations. आपको self-esteem जो है वो केवल unions में समझ आता है. आज अगर आप जंगल में अकेले बैठ के meditate कर रहे हो, you will not come to know your self-esteem. Only when you interact with people and you are yourself in that union and it is joyful. Understand that self-esteem is all about relationships. What they do to you, what you become in them, what you get out of them, and how you flower your unique identity in them. This is self-esteem. आप समझो, as we come up from the different chakra, मूलाधार चक्र में we come to know that we are part of a family, a community. So we identify ourselves with our family. स्वादिष्ठान में we learn to make relationships one to one outside the family. जब हम outside the family, see our parents and all, they will accept us the way we are. But when we make relationships with people outside the family, then you know our self-esteem comes in place. But it is one to one. It could be between mother and child, guru and disciple, friends, spouse, lovers. The union could be between a customer and a supplier. It could be between two partners in business. So self-esteem is always about one-to-one relationship. But when we come to Manipur, when we have already learned the lessons of Swadhisthana, we come to Manipur. And Manipur, it is not one-to-one. It is one-to-many. Because then we become capable of becoming a leader. जब आप वन टू वन रिलेशनशिप कभी कर पाते हो, तभी तो यू आर केपेबल टू हैव वन टू मेनी. यू आर एबल टू लीड मोर पीपल. तो जिनका स्वादिष्ठान ब्लॉक होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल मणिपुर चक्र. सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डाउन टू अप. सो मणिपुर चक्र इज वन टू मेनी एंड हार्ट चक्र इज, हार्ट चक्र क्या होता है? मणिपुर चक्र में यू बिकम अ लीडर. लीडर क्या करता है? अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं, अपने जो लोग हैं, अपनी जो एनवायरनमेंट है, उसको लीड करता है. पर हार्ट चक्र में यू गो इवन वन स्टेप हायर. यू बिकम वन टू ऑल. यू लव एवरीवन irrespective of whether they are part of your environment or not.
your heart opens up in genuine love for everybody. So as you say that as we go up the chakra, अब विशुद्ध में इससे भी ऊंचा होता है. You connect with God. It's not even people, it is people and God. And when you go to Agnya Chakra, you dissolve yourself totally. You become the consciousness and totally. So every chakra is actually evolution of your consciousness. So in Swadhisthana Chakra, it is the pride of being who you are, not being like the other person. As we go into this course, workshop, we will know self-esteem कब जाता है when you try to become like the other person. It is the pride of being who you are. At the same time, the union has to be joyful. आज कोई भी आपकी partnership है, which is not joyful, which is a pain, which is troublesome. You are betrayed, you are taken advantage of. People cheat you, they dishonor you, they reject you. You lose yourself. Through self-esteem, we live our full potential and live our life. Can we live in this world without unions? Can we live? Impossible. We have come into this world for people. We have come to help each other. Today we can't live without unions. We need all different unions in life. To know about life, to enjoy life also we need a union. We can't just enjoy ourselves. So we need unions in our life to do transactions, to increase our wisdom, for knowledge, for sharing opinions, for sharing ideas. It is everything, actually whole life is about unions. It's about partnership. हम उसके बिना तो जी नहीं सकते. So unions are very important in life to experience ourselves, to experience our full potential, to share our wisdom, etc., to do transactions, and basically we need unions to live our life purpose. आज आइंस्टाइन जो है, आज जितने भी people who have achieved, their life purpose, they didn't just discover a light bulb or discover electricity or discover something new and they just went away. They had to share it through unions. Now understand, you as a soul, you are given 3 parts to manage. You are given a mind, body and senses. Generally, लोगों को बोला जाता है mind, body and soul. But today, if you are more evolved, you actually understand these are 4 parts. You are the soul and you are given a mind, a body and you are given senses. अब आपका जो mind है, वो आपके जीवन में आपका रोल है. Are you a father? Are you a wife? Are you a manager? Are you a speaker? Are you an artist? Are you a doctor? Are you a daughter? These are all roles. So your mind is the role within you. आपका mind क्या है? आपकी thinking. हम सबको पता है mind क्या है? It is the role, it is the thinking within us. Next we have got the body. Your body is the identification within you. और AC कम करना. Your body is the identification within you. We identify ourselves with the body. Yes or no? आज हम किसी का दिमाग को तो देख नहीं सकते. कोई भी हमारे सामने आता है, उनके शरीर को देख के कहते हैं, ओह ये तो शीला है, ये तो मनोज है, ये तो राजेश है. आज हमको कहीं भी जाना है, थंबप्रिंट लगाते हैं. कहीं भी जाना है, हमारी फोटो से लोग हमको पहचानते हैं. तो एक्चुअली हमारी जो बॉडी है ना, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन. हम बॉडी से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं. सो योर बॉडी इज द आइडेंटिफिकेशन, बट द बॉडी इज ऑल्सो द अटैचमेंट विद इट. देखिए बहुत डीपर कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड स्वादिष्ठान चक्र वेरी नाइसली. आपका जो बॉडी है ना, वो आपके अंदर का अटैचमेंट है. आई लव माई फैमिली, आई लव माई कार, I love my house, I love my job, I love my friends, I love my children. आपका जितना भी stability, security, assets, possession, do you think mind को ये सब चाहिए? Mind कुछ खा सकता है, पी सकता है? No, mind is an intangible thing.
तो माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता वाइफ से, किसी से, उसको रोल से फर्क पड़ता है, मेरा क्या रोल है। तो माइंड को टैंजिबल चीजों से फर्क नहीं पड़ता, पैसे से, यस और नो, एसेट से। सो योर माइंड इज योर रोल, योर बॉडी इज योर आइडेंटिफिकेशन और द अटैचमेंट। टुडे इफ यू फील अटैच्ड टू एनीथिंग, इट इज योर बॉडी। अब सेंसेस क्या है? सेंसेस जो है हमारे अंदर 10 सेंसेस हैं। हमारे मूलाधार में स्मेल, इनिशिएशन, एक्शन, क्रिएशन, पोजेशन, स्पीकिंग, हियरिंग, हम जो भी इंटरेक्ट करते हैं वर्ल्ड के साथ, दैट इज अवर सेंसेस। तो योर सेंसेस इज द डूइंग विद इन यू। आप जो कुछ करते हो ना, इट इज द डूइंग विद इन यू एंड सेंसेस हेल्प यू टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए इमेजिन अ कंप्यूटर, यू आर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, उसका जो कीबोर्ड है, राइट, उसका जो आईओ डिवाइस है, द बॉडी इज योर बॉडी। तो कंप्यूटर का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी है। उसका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर, इट इज द माइंड। और उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके कारण आप एंजॉय करते हो, कोई गेम खेलते हो, वो एडिटिंग करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हो, ईमेल्स भेजते हो, दैट इज द सेंसेस। सोल क्या है? कंप्यूटर में बॉडी समझ आ गई, उसकी बॉडी है, बॉडी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, स्ट्रक्चर है। उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो उसका माइंड है। जो हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज द माइंड। उसमें जितने गेम्स होते हैं जो आपको एंजॉय कराते हैं, गेम्स के बिना आप कंप्यूटर खोलोगे? आज उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा, विल यू ओपन द कंप्यूटर? सो दैट इज द एक्सपीरियंस। हु आर यू इन द कंप्यूटर? It is the electricity. You are the electricity within the computer. आपके बिना तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, सब कुछ धराया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम चला गया, सो एसेंसेस चली गई, थोड़ा सा स्क्रीन चला गया, फिर भी कंप्यूटर कंप्यूटर। पर अगर बिजली चली गई तो कुछ भी ठीक नहीं। तो यू आर द बिजली, इलेक्ट्रिसिटी विद इन द कंप्यूटर। एंड अंडरस्टैंड कि सारे लोग अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग डिवाइसेस हैं, पर सबके अंदर जो बिजली है ना वो सेम है। पर वो बिजली का ना रोल बदल जाता है। वो कंप्यूटर में जाता है, वो कहता है ओ मुझे गेम्स खिलाना। वो फ्रिज में चला जाता है, मुझे खाना ठंडा करना है। रेडियो में चले जाता है, गाना सुनाना है। टीवी में चले जाना है, पिक्चर दिखाना है। तो जो बिजली है जब वो अलग अलग जगह जाती है तो उसका रोल बदल जाता है। प्रॉब्लम होती है कि वो जो बिजली है ना कंफ्यूज हो जाती है बीच में। क्या मैं कंप्यूटर हूँ? क्या मैं ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ? कि क्या मैं प्रोग्राम? दैट इज ऑल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। बिजली जो है वो इतनी पावरफुल है, हर के अंदर पेनिट्रेट करती है। स्क्रीन में पेनिट्रेट करती है, कीबोर्ड में करती है, हार्ड डिस्क में करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में करती है। तो बिजली हर चीज एक्सपीरियंस कर सकती है। पर प्रॉब्लम होता है कि बिजली सोचने लग जाती है कि मैं कंप्यूटर हूँ, और कंप्यूटर के अगर कीबोर्ड की एक की निकल जाती है तो बिजली को दर्द होने लग जाता है कि मेरा जो कीबोर्ड की निकली हुई है, या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक नहीं है, या मेरा प्रोग्राम्स ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज वी स्टार्ट एसोसिएटिंग आवरसेल्फ विद द बॉडी, विद द माइंड एंड विद द सेंसेस। दिस इज द ओनली लेसन एक्चुअली ऑफ स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान मीन्स गेटिंग एस्टैब्लिश्ड इन योर बीइंग। यू अंडरस्टैंड करो कि जब हम इस जिंदगी में आते हैं, हमारे पास ये टूल्स दिए हुए 3, बोला गया है ओके गो एंड गेट एस्टैब्लिश्ड इन योर बीइंग। वी हैव टू गेट एस्टैब्लिश्ड विद दीज 3 कंपोनेंट्स। बट यू नो ये वर्ल्ड जो है ना, दिस होल वर्ल्ड इज मेड आउट ऑफ डुअलिटी। ये पूरा जो जीवन है ना, ये डुअलिटी से बना है। अब ये बात समझो, अगर आप समझ गए ना, यू विल अंडरस्टैंड हाउ लाइफ इज क्रिएटेड। डू यू नो हाउ नथिंग कैन बी क्रिएटेड, हाउ समथिंग कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग? बिकॉज वी नो कॉन्शियसनेस इज नथिंग। हमें भगवान दिखता क्यों नहीं है? अगर भगवान इतना ही पावरफुल होता तो सामने आ जाता। कृष्ण जी बांसुरी बजा के शिव खड़े होकर बोल देते। वो दिखते क्यों नहीं है?
Because he is nothing. God is nothing. Now, out of nothing, if you want to create something, how it is possible? Who can tell me zero से how can you create something? Zero से. Simple logic, mathematics. How can you create something out of zero? आगे एक लगाने से थोड़ी, एक कौन लगाएगा? You know energy can never be created, can never be destroyed. तो how can you create something out of zero? One तो लगाना पड़ेगा ना, वो तो एक एनर्जी है. How? Transformation. You cannot transform zero. हमको इतने सारे मल्टीपल चीजें क्रिएट करनी है, आप सबको क्रिएट करना है, पूरा सब कुछ क्रिएट करना है. It's not transformation of the consciousness. Consciousness transform नहीं होती. How can you create something out of zero? Think. You are not going to transform zero. How can you create anything out of zero? And that also multiple, many, billions, trillions. Wake up से कुछ नहीं होगा, zero से. The answer is, how can you create anything out of zero? Because you will create +3, but you will create -3 also. You will create 2, you will create -2. You will create 100, you will create -100. Doesn't it become infinite? You can create anything provided you create the opposite. So you can create good only when you create evil. You can create profit only when you create loss. You can create love when you create hurt. सारी चीजें in this world is a pair of opposites. Because actually कोई भी चीज reality नहीं है. So everything is created out of a pair of opposites. To understand from life, a fear of life is born. Today when your soul has to get established, there has to be an anti-force which will not allow it to get established. And this is the war of being a human being. आज आपको नेगेटिव को पहले रियलाइज करना पड़ता है, फिर पॉजिटिव दिखता है. आपको पता है कंस पहले था, कृष्ण बाद में आया. रक्तबीज पहले था, दुर्गा काली बाद में आई है. हिरण्यकश्यप पहले था, फिर नरसिम्हा आए. आप जितने भी असुर को देखो, असुर पहले था, उसके बाद भगवान आए. रावण के कारण राम आए. When you destroy the negative, only then you can see the positive. आपको लाइट तभी दिखती है जब आपको अंधेरा दिखता है. आपको खुशी तभी फील होती है जब आपको दर्द फील होता है. And understand, life is always a pair of opposites. आप दुनिया में कुछ भी काम नहीं कर सकते जब तक there are two opposites. But doesn't mean कि उसके लिए हम करना छोड़ दें. आज कृष्ण को अगर जीना था, कृष्ण इज लाइफ, तो उनको कंस के यहाँ आना था, जो कितने सारे बच्चे मरे थे, तब जाके जिंदगी आई थी. तो जिंदगी आने के लिए मौत भी आई. So understand, life is about that there will always be two opposite. आज आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको लॉस देखना ही पड़ेगा. शादी करना है, मदर इन लॉ देखनी पड़ेगी. हर चीज के लिए एक ऑपोजिट 100% आएगा. इट इज योर चॉइस. यू वांट टू ट्यून टू द पॉजिटिव और यू वांट टू ट्यून टू द नेगेटिव. और नेगेटिव कहीं जाता नहीं है, वो वहीं रहता है. उस दिन मेरे को एक ख्याल आ रहा था कि सपोज सम पर्सन इज गुड टू यू, योर गुड फ्रेंड, ओके, यू एंजॉय विद दैट पर्सन, उसके साथ आप एंजॉय करते हो, यू स्पेंड मेनी इयर्स विद दैट पर्सन, द पर्सन हेल्प्स यू, you have a very good time with that person and you spend couple of moments or couple of years or couple of weeks with that person. जब खुशी आती है तो नेगेटिव भी साथ साथ रहती है, पर हम लोग देखते नहीं है, हमें अच्छा ही दिखती है. पर ऐसा क्यों होता है कि अगर वो फ्रेंड ने एक दिन आपको बिट्रे कर दिया, हमको इकट्ठे सारी बुराइयां क्यों दिखने लग जाती? इकट्ठे सारी एक पता है उस दिन उसने ये किया तब भी मैंने माफ किया, उस दिन ये किया मैंने तब भी माफ किया. हमको सारी नेगेटिव ना ट्रेन के साथ दिख जाती है. ये जितनी भी नेगेटिव है ना, दे आर ऑल स्टोर्ड इन द ईगो. हमारा जो ईगो है वो वेट कर रहा होता है कि बहुत एंजॉय कर लिया, कभी तो मेरे पास आएगा, कभी तो मेरे साथ ट्यून करेगा. तो हमारा जो ईगो है वो आराम से बैठा रहता है.
देखता है अच्छा चल एंजॉय कर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और वो ईगो जो है वो सारे नेगेटिव को अपने साथ स्टोर करके रखता है अपने साथ। और जब टाइम आता है हम सडनली यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, फिर वो ईगो सारे नेगेटिव में दिखाकर हमें पुल कर देता है। दैट इज वाई देयर आर मेनी पीपल इन लाइफ जो कहते हैं मैडम मेरे साथ ना 2010 तक तो बहुत अच्छा हुआ, फिर पता नहीं ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से मैडम 4 साल हो गए जॉब ही नहीं मिला, क्योंकि एक छोटा सा उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया, उनके पार्टनर ने उनको चीट कर दिया, या उनके यहाँ रेड पड़ गई, या सडनली उनको दिखा के उनके चहेते कस्टमर्स जो है उनको छोड़ गए, या उनके पास में कॉम्पिटिटर की दुकान खुल गई, या उनका डाइवोर्स हो गया, व्हाटएवर। उस सिचुएशन में सडनली आपने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, इधर की जगह इधर, अब ईगो ने आपको चक्कर लिया, अब आप नेगेटिव के साथ एसोसिएट हो। तो कृष्ण जो कहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव है नेगेटिव भी है, बट इट इज योर चॉइस। तभी तो कृष्ण के सारे काम आप देखो, सारे दुभाते, पैदा कहाँ हुए, बड़ा किसने किया। महाभारत जो है उसमें कौरव पांडव, he chose to be with one team. He says कि life is beautiful, but you have to choose. You can choose to be with a beautiful life. आज सोचो कि भाई मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही नहीं हूँ, मेरे स्टेप पेरेंट्स हैं, स्टेप ब्रदर है, और मैं जिसको लव करता था उससे तो शादी नहीं कर सका। आज सोचो ना, सबसे ज्यादा लोग दुखी होते हैं वो सब कृष्ण के साथ हो चुका है। He loved राधा, he couldn't marry her. तो जो मदर थी उनके साथ रहते नहीं थे, बचपन में उनको मारने की कितनी कोशिश की गई। तो अंडरस्टैंड, उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, उनकी कहानी सुनो, बट ही स्टिल टोल्ड कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। उसके बाद भी ही वाज एवर स्माइलिंग, यू नो, ही टोल्ड अबाउट द ज्ञान। सो अंडरस्टैंड कि लाइफ में दो ऑपोजिट्स हमेशा चलते हैं, इट इज योर चॉइस। दैट्स व्हाई कहते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। नेगेटिव तो होगा बट बी पॉजिटिव। और लाइफ का एवोल्यूशन अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो शॉर्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि फर्स्ट स्टेप होता है जो हमारे सोल को स्टैब्लिश होना होता है। आवर सोल हैज टू गेट स्टैब्लिश्ड, बट द मोमेंट योर सोल सेज आई वांट टू गेट स्टैब्लिश्ड, एक एंटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आई विल नॉट लेट यू गेट स्टैब्लिश्ड, आई विल नॉट लेट यू गेट स्टैब्लिश्ड। टुडे द वॉर इज फाइटिंग दैट नेगेटिव एनर्जी who is telling I will not let you get established. वो नेगेटिव एनर्जी क्या बोलती है? वो नेगेटिव एनर्जी कहती है ये जगह जो है ना सेफ नहीं है, इट्स नॉट सेफ, यू आर नॉट लव्ड, यू आर नॉट रिस्पेक्टेड, यू आर नॉट एप्रिशिएटेड, यू कांट कंट्रोल, थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। Actually understand it is the ego of the soul which doesn't allow you to get established. क्योंकि हमें कोई बोल थोड़ी रहा है यू आर नॉट गुड इनफ। आवाज कहाँ से आ रही है? जो जिनका स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक है उनके कंटिन्यूस कान में आवाज आती है यू आर नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट गिव योर ड्यू, यू आर नॉट एप्रिशिएटेड। ये कौन बोल रहा है? किसी ने एक्चुअली ये शब्द कभी बोले हैं? ये अंदर से आ रही है ना आवाज, यस और नो? आवाज अंदर से आ रही है ना, फिजिकली तो हार्डली किसी ने बोला है एक्सेप्ट योर वाइफ, जिसको लगता है उतनी सैलरी नहीं आ रही है। एक्चुअली किसी ने ऐसे शब्द बोले ही नहीं है आपको, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट एप्रिशिएटेड, यू आर रिजेक्टेड, यू कांट डू, यू आर वर्थलेस। ये शब्द एक्चुअली किसी ने नहीं बोले। ये शब्द जो आपके कानों में गूंजते हैं ना वो आपके ईगो ने बोले, ईगो ने। So let us go into this and let us after this we'll do a meditation to release the ego. So understand, when this chakra is balanced, you have a clear sense of boundaries, limits, you support yourself and others, and when it is imbalanced, you are either very self-depreciating, you feel you are not good enough, or you are very manipulative. आज एक पर्सन जो कंपल्सिव लायर है, who is very manipulative, he is also Swadhisthana Chakra imbalanced, and another person who feels I am not good enough, I am not good, is also Swadhisthana Chakra imbalance. पर जिसका चक्र बैलेंस होता है, he knows who he is, he knows his boundaries, he knows his limits, he knows how to tell people stop, you cannot talk to me like this, you cannot take advantage of me, you cannot come more than this.
He knows his personal boundary. At the same time, he is able to interact and make very healthy relationships with every person. He doesn't have to run away from relationships, nor does he have to sacrifice himself like a doormat in relationships. He can have a very healthy and joyful union in relationships. Why do you lose your self-esteem? आपका confidence क्यों जाता है? Because of how you live your potential during unions with people and situations at specific points of time. आपका confidence केवल relationships में जाता है. जब आप relationships में देखते हो कि I am not honored, I am not respected, I am rejected, I failed, I took a back step, then you lose your self-esteem. How do you know you have lost your self-esteem? Read it. You will know whether you have lost your self-esteem. You can read this or you can come here. So how do you know you have lost your self-esteem? You don't feel appreciated. कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे कोई appreciate नहीं करता. घर में मैं सबके लिए sacrifice करती हूँ, कोई मेरे को appreciation ही नहीं मिलता. ये बड़ा common dialogue होगा, बहुत common. तो देखिए realize करिए, क्योंकि जब तक हम fight करेंगे मेरा नहीं है, you cannot come out of it. जब तक हम वो असुर को देखेंगे नहीं, हम उससे लड़ नहीं सकते. और हमको अपनी negativities को बहुत magnify करना पड़ता है, तभी हम उस negativity को फेंक सकते हैं. You often that you feel people take advantage of you. मेरे friends मेरा advantage उठा लेते हैं, सारा काम मेरे से करा लेते हैं, ऑफिस वाले सारे अपना काम मुझे दे देते हैं. I end up doing all the work. I am not given my due in spite of working hard. मैं इतनी मेहनत करता हूँ, promotion का time आता है, बस मुझे role दे देते हैं, पैसे नहीं देते. It doesn't translate. बहुत लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके साथ होता है. Someone else reaps the fruit of your labor and someone else is doing what you wanted to do. मेरे दोस्त हैं, हमने सब इकट्ठे पढ़ाई की, वो आगे निकल गए, मैं रह गया. In spite of being capable, you are not able to succeed. You give more importance to others and end up compromising and sacrificing. Lot of housewives, they feel मैंने तो पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए स्पेंड कर दी और मुझे कोई appreciation नहीं मिला. Nobody. You have negative thoughts because जब यहाँ पर joy of life है, तो definitely यहाँ negativity of life है. यहीं पर एक person wants to commit suicide. This is a chakra where people want to put themselves to substance abuse, alcohol, drug addicts, rapists, सारे के सारे इस चक्र से पैदा होते हैं. जिनको जिंदगी की खूबसूरती नहीं पता, वो ही जिंदगी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. कभी कभी स्वयं की जिंदगी और कभी दूसरे की जिंदगी. This is the chakra of life. And basically, you feel that you always attract wrong people. Many people feel कि all people I attract they are wrong. यही चक्र जिसका imbalance होता है, उसको शादी में प्रॉब्लम होती है. जिनकी शादी डिले होती है, लड़के की लड़की की, they are not able to find the right partner. Basically, it is this chakra. Because why you are not able to find a life partner? Because आपको जिंदगी का joy नहीं पता. You don't feel a taste of life. और जब आपको joy नहीं लगता मैरिज करने का, how will you attract the partner? Yes or no? शादी कोई पिल थोड़ी है कि चलना शादी करना है, ओके कर लेते हैं, चलो दवाई. आज जिंदगी में कुछ भी चीज अट्रैक्ट करनी है, you have to feel excited about it. But if you are not excited, the thought of getting married makes you terrified. You are scared to get married. You feel that what if I get married? Like people who come to me for marriage counselling, basically these are the fears which I have to address. They are basically fearful of unions. They are scared कि आज अगर मेरी जिंदगी में कोई आदमी आया या उसकी मदर, and somehow I am not able to deal with them. Somehow he puts me down, he rejects me, or I am not good enough. So you don't find the idea of the union joyful. Because you don't find it joyful, it will not happen. You will not attract. At the same time, this is also the chakra where you have children.
All couples who are not able to conceive, it is because of blockage of this chakra. You are not able to conceive. Because to create life, you have to love life. You are not able to create life. It is not about having a physical problem. It is all about having a Swadhisthana Chakra blockage. Where you are not able to create life because life is not joyful for you. And basically, because of this chakra, people have low energy, muscular pain, lower back pain, constipation, kidney, bladder, intestine, sexual issues. These all issues happen. It means that you have lost your self-esteem. Emotional effects. People feel emotional instability, low self-confidence. You feel chronically tired, fatigue. Itni thakaan, you don't understand. So much of tiredness. Hallucinations. People start imagining black magic. You start hallucinating. It's basically this chakra. Because of intense fear of life, people start fearing black magic. Actually, there is nothing like black magic in this world. There is nothing. But because you start fearing, you get this hallucination. Emotional effects, anger, rage, negativity. Physical, because this is the location. You have got lower back pain, body ache, tiredness, indigestion, and issues with these organs. And because of blockages, you have unfulfilled relationships. You don't find opportunities, you don't find growth in life. At the same time, you have losses and you have debts, enemies, court cases. Because life becomes negative. जो चक्र life beautiful बनाता है, उसका opposite कि life is fearful, threatening, negative also comes in this. Now, what are the 4 fears that block this chakra? The first fear is self-doubt, and let us deal with the first fear, which is self-doubt. Now, what happens in self-doubt? आज जिंदगी में हम बहुत सारी सिचुएशन फेस करते हैं, बट अंडरस्टैंड वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू द चैलेंज. आज बच्चे स्कूल के लिए पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स. You appear in a competition interview, you are not able to get the required position. So today, if you find that I am not able to live up to the challenges or I am put down, you start doubting yourself. Basically, you start associating with all the negative things with your ego. But jab tak you have self-doubt, what will happen? Till you have self-doubt, you will keep on attracting the same situations again, because your soul, you are the magnetic energy which attracts all the positive things in your life. If you associate with negative, you will attract negative. So, are we ready to do a meditation to remove self-doubt? बहुत सारे theory हो गए. Understand, we are constantly doubting ourselves. We are constantly living in self-depreciation. हम हमेशा खुद को जज कर रहे हैं. आज कुछ भी होता है, आज हमें प्रमोशन नहीं मिलता, कोई हमें नेगेटिव बोल देता है, कोई भी हमारे सामने नेगेटिव सिचुएशन आती है, सबसे पहले हम खुद पे उंगली लगाते हैं कि आई एम रॉन्ग, कहीं पर मैं कमजोर पड़ गया, कहीं पर आई एम लेस, आई डोंट डिजर्व. So we start doubting ourselves, and that is the first fault. सबसे पहला हमारा fault है that we judge ourselves. Understand in life that you are the pure soul and you cannot judge yourself under any situation. If you judge yourself, definitely sometimes you will feel you are good, sometimes you will feel you are bad. But understand that whenever you associate with bad, negative things will start happening in your life. You have to understand that you are the pure soul. Every type of situation will happen
happen, sometimes success, sometimes failure. Success will tell you that I am on the right path. Failure will tell what I should not do next time or what I should do next time. We have to understand situations जिंदगी में अलग-अलग आती रहेंगी. But I should not look at a negative situation and think it has something to do with me. I have to understand if it is a negative situation or an adverse situation, either in a relationship, in your home, in your career, the negative situation has happened because I have to learn from it. I have to learn how to handle. I have to get more wisdom. I have to change my doing. But I don't have to change my being. When you say, I am not good enough, you are cursing the God within you. When you are judging yourself, you are judging the God within you. और जैसे ही आप स्वयं के गॉड को जज करते हो, you get lower back pain, you get constipation, you get kidney problems, you get tiredness in the body. At the same time, you start becoming negative. So are we all ready to release this habit of judging ourselves? Are we ready to understand that from today, I am going to, whenever there is a situation, I will be out of the picture and I will think that whatever negative situation has happened, it is because of my mind, body or sense control. I have to learn to control my mind, body or sense. But I should not judge myself. I should not judge myself. I am the pure soul. But to stop judging yourself, you have to first release all the negative beliefs that you have formed around yourself. We have to first release them completely from our being, whatever we are negatively judging ourselves. But in order to release, we have to first magnify it. We have to first magnify it. That I feel I am not good enough. I think I have done wrong. I have done wrong. I am guilty. जब तक आप उसको मैग्नीफाई नहीं करोगे, आप देखोगे नहीं और फिर उसको फेंकोगे. Once you release all the negative, we will surrender the habit of judging ourselves completely. Are we ready? So we will do like this. We will release from every aspect. Close your eyes. Today, I am constantly judging myself. I constantly feel so low. I am constantly angry with myself. I have so much of rage